हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका इस बेहतरीन से सेशन पे जहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक पॉलिटी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे कहना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए। अच्छा लगे तो सब लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। सो लेट्स बिगिन। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज of Indian citizens are there in the Indian Constitution? So this is the question given. 4 options are given. You have been asked question on fundamental duties. You have important points related to fundamental duties. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं important pointers को। Swaran Singh Committee. Okay, you have to remember the name of this committee. Swaran Singh Committee was set up in the year 1976. Okay, in the year 1976 to make recommendation about fundamental duties. Okay, the next point is 42nd Amendment Act 1976, or you can say 42nd Constitutional Amendment Act 1976. This amendment added a new part. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पे एक नया पार्ट जोड़ा गया and this part is part 4A. ठीक है, which consists of code of 10 fundamental duties. गलती नहीं करना है। 10 fundamental duties तो जोड़ा गया था, ऐड किया गया था, लेकिन 86th Amendment Act 2002 पे 11th fundamental duty को लिस्ट में जोड़ा गया। and 11th fundamental duty क्या कहती है? To provide opportunities for education to his child or ward between the age of 6 and 14 years. ठीक है, तो एक ही आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है, दैट इज आर्टिकल 51 क्लॉज ए। तो चलिए अब ऑप्शन को देख लेते हैं। अब हमें क्या पता चलता है? 2 अमेंडमेंट के द्वारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 and 86th Amendment Act 2002, there are total code of 11 fundamental duties. So this is the correct answer. I hope this is absolutely clear to you all. Our next question is based on fundamental right. Clear? देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Which article of the Constitution of India provide equal protection of the laws and equality before the law? ठीक है, so this is equal protection of laws and equality before law is about Article 14. ठीक है, which comes under the category of right to equality. I hope this is clear to you all. Okay, and right to equality comprises of Article 14, Article 15, Article 16, Article 17 and Article 18. Okay, and always remember this is a fundamental right. Okay, okay my dear aspirants, so as per the given options, Article 14 is the correct answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर पॉलिटी एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है सिलेबस का, देन यू कैन गो थ्रू ऑल दिस क्वेश्चंस गिवन इन दिस प्रैक्टिस सेट्स। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। आपने अभी तक जो जो पढ़ा हुआ है पॉलिटी में, आपको एक आइडिया देंगी क्या पॉइंट अप्लाई करना है बिफोर आंसरिंग अ क्वेश्चन, एंड रिवीजन का मौका तो जरूर देगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। राइट टू एजुकेशन वॉज एडेड, नोट द वर्ड एडेड, एज अ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन ब्लैंक। देखिए अब दिए गए ऑप्शन में से आपको क्या आइडिया लग रही है? द आइडिया इज कि आपको सही ईयर बताना है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट को ऐड किया गया था, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, अब किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसे ऐड किया गया था टू द कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002।
Clear? I hope this is absolutely clear to you all. This Amendment Act inserted Article 21 Clause A. ठीक है, Article 21 Clause A. Right to education is recognized as a fundamental right in Part 3 of the Constitution of India. ठीक है, समझ में आया? So the answer is 2002. The correct answer is option number C, 2002. अगर क्लियर हो गई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑन टाइम इन रिगार्ड ऑफ द अपलोडेड वीडियोस. चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स of the Constitution of India refers to the protection and improvement of environment, safeguarding of forests and wildlife. अब किस आर्टिकल में ये बात कही गई है? टू प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ. ठीक है, तो देखिए दिए गए ऑप्शन में से क्या कहा गया? आर्टिकल 39 क्लॉज ए, Article 43 Clause A, Article 48 Clause A, Article 51 Clause A. ठीक है, so our correct answer is Article 48 Clause A. So this is the correct answer. अब Article 48 Clause A किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया? आपको याद रखना है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. ठीक है, इसके द्वारा इसे इंसर्ट किया गया टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड दिस इज आर्टिकल 48A विच टॉक्स अबाउट टू प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ. क्लियर? अब आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे आर्टिकल 51A किस पार्ट पे अवेलेबल है. ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसी लेसन पे कराया हुआ है, आप मुझे बताइए. चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप लोग पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन पे कि ये क्वेश्चन पूछा गया मैंडामस के ऊपर. ठीक है, मैंडामस इज अ रिट इशूड बाय द एपेक्स कोर्ट. सो मैंडामस के बारे में पूछा गया एंड मैंडामस इज अ रिट. So there are 5 types of writ available. One is habeas corpus, second is quo warranto, third is mandamus, fourth is certiorari and the fifth is prohibition. ठीक है, ये क्वेश्चन मैंडामस के ऊपर दिया गया है. ठीक है, so writ of mandamus is a command issued by a court to an authority directing it to perform a public duty imposed upon it by law. As per Article 32 of the Indian Constitution. As per Article 32 of the Indian Constitution, writ of mandamus along with other writs can be issued by the apex court, that is the Supreme Court of India. And as per Article 226, the High Courts have the power to issue writs. So आपसे देखिए यहाँ पे दे दिया गया ऑप्शन, सटीक ऑप्शन जो मैंडामस रिट से मैच करती है उसे आपको चूज करनी है. आस्किंग अ पब्लिक ऑफिशियल और एनी अथॉरिटी टू परफॉर्म लीगल ड्यूटीज इज एक्चुअली व्हाट रिट ऑफ मैंडामस एक्सप्लेन्स. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, करेक्ट आंसर. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू ऑल. ठीक है, अगर आपको ये सेक्शन अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करें. चलिए, तो आपको रिट के बारे में अगर और जानकारी लेनी है तो ऑलरेडी इट इज़ एक्सप्लेन्ड इन वेरियस प्रैक्टिस सेट्स गिवन हियर, तो प्लेलिस्ट जाके चेक करें. मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन, मतलब यू हैव बीन आस्क्ड विच पार्ट. ठीक है, which part. ठीक है, part 1. तो part 1 is talking about the union and its territory. Okay,
Part 1 is talking about the union and its territory. Part 4 talks about DPSP, that is Directive Principles of State Policy. Okay. Part 5 talks about the union. Okay. And part 3 talks about what? Fundamental rights. Okay. So our correct option is part 3. Clear? So finally we have come to the end of this practice set. Let's read out the question first. Which article of the Constitution of India under the Directive Principles of State Policy talks about organization of village panchayats? So सीधे सीधे तरीके से आपसे पूछ लिया गया कि which article of the Constitution of India under the Directive Principles of State Policy talks about organization of village panchayats. So this is Article 40. Okay, so this is Article 40. This is the answer. Okay, organization of village panchayats. So let's remember about Article 48. Article 48 talks about organization of agriculture and animal husbandry. Okay. Article 39 clause A talks about equal justice and free legal aid. Equal justice and free legal aid. Okay. Article 43 talks about living wages, etc. for workers. Okay. So finally we have got the correct option of this particular question. तो माय डियर एस्पिरेंट्स, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यू कैन चेक द गिवन प्लेलिस्ट्स ऑन वेरियस टॉपिक्स लाइक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इंग्लिश पैसेज, जीके, जीएस, मैथ्स, पॉलिटी and practice sets on various SSC exams. So keep practicing, stay fit and fine. Take care. Thank you.